अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है that what are the different interpretations to the term life and liberty under article 21 of Indian Constitution। अब यहाँ पे हम वेरियस केस लॉज को देखेंगे जहाँ पे लाइफ एंड लिबर्टी का जो फ्रेज है उसको एग्जामिन किया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द केस ऑफ A.K. Gopalan versus State of Madras। Up in this particular case, Supreme Court gave a very narrow interpretation of the term life and liberty. Here the Supreme Court held that the significance of the term life and liberty is that no person is arrested in violation of law. No person is arrested in violation of law। यानी यहाँ पे लाइफ एंड लिबर्टी का जो इंटरप्रिटेशन है वो अनलॉफुल अरेस्ट के रिस्पेक्ट में ही किया गया था। यानी यहाँ पे लाइफ एंड लिबर्टी जो फ्रेज है इसके इंटरप्रिटेशन अनलॉफुल अरेस्ट के रिस्पेक्ट में ही करी थी। अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब इस केस में क्या होता है, हियर द एक्यूज्ड वाज एक्विटेड ऑफ द ऑफेंस ऑफ डेकॉइटी। यहाँ पे एक्यूज्ड को डेकॉइटी के ऑफेंस के लिए एक्विट कर दिया गया था, लेकिन एक्विटल के बाद भी एक्यूज्ड के ऊपर सर्वेलेंस रखी जा रही थी। द एक्यूज्ड वाज कॉन्स्टेंटली इन सर्वेलेंस। अब यहाँ पे द एक्यूज्ड हेल्ड दैट दिस इज वायलेशन ऑफ माय राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी वाज हेल्ड टू बी फंडामेंटल राइट इन द लेटेस्ट पुट्टा स्वामी जजमेंट। लेकिन एट दैट टाइम राइट टू प्राइवेसी वाज नॉट कंसिडर्ड टू बी फंडामेंटल राइट। अब यहाँ पे एक्यूज हेल्ड दैट दिस इज वायलेशन ऑफ माय राइट टू प्राइवेसी एंड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट life and liberty under article 21 does not mean a mere animal like existence, and article 21 consists of many rights by which life can be enjoyed। अब इसके बाद we have the case of मेनका गांधी versus Union of India 1978। अब in this case Supreme Court gave a wide interpretation to the term life and liberty। Here Supreme Court held that the term life and liberty includes many rights। Some of these rights have independent protection under Article 19, and some of these rights have protection under Article 21, read with Article 14 of Indian Constitution। अब अगर आप Article 21 देखोगे वहां पे लिखा हुआ है that life and liberty can be taken by procedure established by law। यानी अगर आपको फॉर एग्जाम्पल किसी भी पर्सन को जेल में डालना है तो यहाँ पे प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो है ये फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप एक एक्यूज्ड की लिबर्टी को ले सकते हो। अब in the case of Menka Gandhi, it was held that before taking the liberty of a person, three things must be checked। First of all, there must be a valid law which takes away the liberty of the accused। Secondly, this law must provide procedure to take away the life and liberty of the person concerned। And thirdly, such procedure must be strictly followed। अब in the मेनका गांधी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने एक और चीज बोली थी that Article 21, Article 14 and Article 19 of Indian Constitution, they form a golden triangle। हम यहाँ पे एग्जामिन करेंगे that how these three articles are interconnected with each other। सबसे पहले हम देखेंगे that how Article 14 and Article 21 of Indian Constitution are interconnected। अब हमने ये चीज ऑलरेडी एग्जामिन करी हुई है कि अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ एंड लिबर्टी लेनी है तो यहाँ पे कोर्ट तीन चीजें देखेगी।
First of all, the court will see that whether the law providing for taking away of life and liberty is valid or not. Is valid or not. इसके बाद court will see that whether the procedure which is given under this law, to take away the life and liberty, is reasonable or not. And after that, court will see that whether this procedure is followed in the case or not. और जब ये तीनों चीजों का एग्जामिनेशन होगा, when these three things will be examined, then the court will have to do a thorough examination of Article 14 and Article 21 together. अगर एक लॉ आर्बिट्रेरी है, अनजस्ट है, तो आर्टिकल 14 को भी वायलेट करेगा एंड साथ में आर्टिकल 21 को भी वायलेट करेगा. If a law is unjust and arbitrary, then it will violate Article 14 as well as Article 21 of Indian Constitution. And hence we can say that Article 14 and Article 21 are well connected with each other. अब इसके बाद हम आते हैं relation between Article 21 and Article 19 of Indian Constitution. अब इसमें you can write that whenever the life and liberty of the individual is taken away on the grounds of Article 19 clause 2, then the court will do a thorough examination. Of Article 21 and Article 19 of Indian Constitution. फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन के आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अनरीजनेबली कर्टेल कर रहे हो, ये आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर आएगा एंड इसलिए हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं. अब यहाँ पे यू कैन सी कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 का गलत एप्लीकेशन किया जा रहा है एंड दैट इज व्हाई इन दिस पर्टिकुलर केस टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, the court will do a thorough examination of Article 21 and Article 19. And here the arrest of the accused can be declared to be illegal by the court. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये तीनों आर्टिकल्स, Article 14, Article 19 and Article 21. These articles form a golden triangle. And they are well connected with each other.